फ्रंट मैटर 224 नंबर पेज है जो रिपोर्ट राइटिंग में फ्रंट मैटर, द मिडिल पार्ट एंड देन द फाइनल पार्ट और द एंड पार्ट. किसी भी थीसिस रिपोर्ट या किसी भी बिजनेस की रिपोर्ट का शुरू का पार्ट कहलाता है फ्रंट मैटर, व्हिच इज द कवर. A cover is usually made of white or some soft neutral colored card. It protects the manuscript from damage. ये last time भी हम कर चुके हैं लेकिन मैं फिर revival के लिए कर रहा हूँ. From damage and gives the report a neat appearance. Some organizations have prepared covers which have their name and address printed on them. All one has to do is to write or get typed the title of the report, its number, if any, number 3, the date, and number 4, the classification, secret, top secret, etc., if any. These items of information help identify the report when it is in circulation or filed. Sometimes the name of the author and the authority for whom the report is written are also mentioned. तो ये शुरू का पार्ट होता है जो कि आपने किसी भी थीसिस या रिपोर्ट के पहले दूसरे सफे के ऊपर कवर करना है, जिसको आप कवर कहते हैं. The cover gives the first impression and you should therefore not crowd it with information. Too many items are likely to distract the reader's attention and mar the attractiveness of its layout. The inside of the front cover and both the inside and the outside of the back cover are usually left blank. Sometimes the inside of the front cover is used for indicating the circulation list. A sample cover is given in Exhibit 18.1, and this is a sample cover of a report. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप सीक्रेट ऊपर लिखा गया है, रिपोर्ट का नंबर है, नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, शहीदपुर, airworthiness of Aero 51 fighters, 4th of August 2014. Front piece. A front piece generally appears in bound reports which are meant for wide circulation. It is a sort of window display that ignites the curiosity of the reader. The forms most often used for the purpose are photographs, maps and artistic drawing. जो front piece है उसके अंदर ऊपर आप बना के पेश किताबों के ऊपर आपको पहले पेज के ऊपर कोई ना कोई फोटो भी मिलती है. टाइटल पेज, usually the title page is the first right hand page of the report. In addition, यानी रिपोर्ट जब आप खोलते हैं तो पहला सफा पूरा छोड़ दें और राइट साइड पे जो आपको पहला पेज नजर आएगा उसको कहते हैं टाइटल पेज. उमूमन उस पेज के ऊपर आपको वही चीजें स्क्रिप्टेड मिलेंगी जो कि आपको पहले पेज के ऊपर कवर पेज पे मिलती है. This is the title page. For instance, if you ever go to a library, अगर इत्तेफाक हो कभी जिंदगी में लाइब्रेरी जाने का तो वहां से किताब मिलती है, किताबें भी होती हैं. किताब जब आप खोलते हैं तो खोलने से पहले आप उसका बाहर वाला पेज देखते हैं जिसको आप उसका कवर कहते हैं. कवर जब आप खोलने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद आपको पहले पेज पे टाइटल पेज मिलता है जिसके अंदर फर्दर डिटेल्स होती हैं. बुक का पूरा टाइटल, सबटाइटल, एडिशन नंबर एंड फर्दर ऑन द पब्लिशर्स नेम एंड अदर डिटेल्स व्हिच आर नेसेसरी. तो दोस डिटेल्स आर आल्सो देयर इन अ रिपोर्ट. रिपोर्ट भी एक मिनी किताब है या रिपोर्ट भी एक मिनी किताबचा है. Usually the title page is the first right hand side of the report. In addition to all the information given on the cover, it may contain the following information. कौन सी following information? The subtitle. बुक के ऊपर आमतौर पे आपको बुक के कवर पेज पे आपको सिर्फ टाइटल मिलेगा, लेकिन अगर उस किताब का टाइटल लंबा है और उसका एक सब टाइटल भी है, फॉर एग्जाम्पल बुक के टाइटल को अगर बुक का टाइटल है इंडो-पाक कॉन्फ्लिक्ट तो किताब के कवर के ऊपर आपको इंडो-पाक कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा. लेकिन अगर आपने उसका एक्चुअल टाइटल देखना है जिसमें उसका सब टाइटल भी शामिल है तो आपको मुमकिन है कि अंदर वाले पेज पे पूरा टाइटल मिलेगा, इंडो-पाक कॉन्फ्लिक्ट कोलन एन ओवरव्यू सिंस 1948 till 1999. ये उसका सब टाइटल हो गया कि इंडो-पाक कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ उसके शुरू में दिया गया है जबकि उसका पूरा टाइटल किताब के अंदर वाले पेज में जिसको आप टाइटल पेज कहते हैं उसके अंदर मौजूद है. तो दिस इज कॉल्ड सबटाइटल. नेम ऑफ द ऑथर जरूरी नहीं है कि पहले कवर पेज के ऊपर मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली किताब के टाइटल पेज पे जो कि किताब का राइट हैंड साइड का पहला पेज है
उस पे आपको लाजमी तौर पे नेम ऑफ द ऑथर मिलेगा. नेम ऑफ द अथॉरिटी फॉर होम द रिपोर्ट वाज रिटन, और जिसके लिए वो रिपोर्ट लिखी गई है उसका नाम भी लिखा जाएगा. तो डोंट कंफ्यूज बुक विद अ रिपोर्ट. मैं जब आपको किताब से एग्जांपल दे रहा हूं तो मैं वो चीजें मेंशन कर रहा हूं जो कि किताब में और एक रिपोर्ट के अंदर, बिजनेस रिपोर्ट के अंदर टैली करती हैं या सेम हो सकती हैं, और उसमें टाइटल पेज, कवर पेज, ये दोनों चीजें डेफिनेटली आइडेंटिकल है. एंड फर्दर ऑन आप जब देखते हैं कि रिपोर्ट के अंदर जिस अथॉरिटी को आप रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उसका नाम जरूर लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप पंजाब फूड अथॉरिटीज के इंस्पेक्टर हैं तो आपने फील्ड का विजिट किया, आपको मछली मार्केट का विजिट किया फॉर इंस्टेंस आजकल, तो आपने वहां देखा कि हाइजीन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया गया और किसी जगह पे मुर्दा या पुरानी मछली फरोख्त हो रही है, तो आपने उसकी रिपोर्ट पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर को पेश करनी है. तो उसके लिए फिर आप रिपोर्ट का कवर पेज होगा और उसका टाइटल पेज होगा, रिपोर्ट का नाम लिखा होगा, और फिर डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटीज लिखा जाएगा, जो कि जिस अथॉरिटी के नाम आप वो रिपोर्ट लिख के दे रहे हैं. और रिपोर्ट के अंदर मेन बॉडी में आप बताएंगे कि फलां से फलां डेट तक आपने फलां जगह पे फिश मार्केट्स को विजिट किया, फलां जगह पे आपने क्वालिटी अच्छी पाई और वेंडर्स और बायर्स का कॉन्फिडेंस आपने विन किया, और आप यू आर कंटेंट विद द काइंड ऑफ फिश बीइंग सोल्ड ओवर देयर, बट यू आर नॉट कंटेंट विद द क्वालिटी ऑफ फिश सोल्ड एट सर्टेन प्लेस. तो आपने इस चीज को मेन बॉडी के अंदर लिखना है. दैट्स व्हाट यू कॉल अ रिपोर्ट. Name of the authority for whom the report was written. And number 4, contract, project और job number. आपका जो contract या job number है, जो आपने अपना तारुफ जो है अपने एक डिजिटल नंबर से करवाना है कि you are an inspector and this is your title. अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप अपना रोल नंबर लिखेंगे ताकि आपकी एक डिजिटल शनाख्त जो है उसको माना जाए. एक सेकंड. Right, so this is title page. Cover page के बाद आपका title page है, and remember this is all part of the front matter. तीन parts हैं एक report के, front matter, main body, and the last part, or the what you call the back matter, right? Front matter, main body, and the back matter. So we are currently talking about the front matter or the title and the cover. And number 5, approvals. क्या आपको अप्रूवल हासिल है इस रिपोर्ट को बनाने का? क्या किस परमिशन से आपने वो रिपोर्ट कंस्ट्रक्ट की है, ये लिखी है? तो आपको एक ऑफिशियल लेटर दिया गया होगा जिसका रेफरेंस नंबर आपने देना है. नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, कि ये कहाँ ये किताब जो है वो जानी है, ये जानी चाहिए, right? Sometimes you will be required to get your report approved by some other officers before submission. Sometimes you will be required to get your report approved by some other officer before submission. When you do this, mention the name and designation of the approving officer on the title page. कभी-कभार आपको अपनी रिपोर्ट जमा कराने के लिए एक मखसूस ऑफिसर का अप्रूवल चाहिए होता है. एकेडेमिया में जब हम थीसिस करवाते हैं या रिसर्च करवाते हैं, अगर BS, MA, MPhil या PhD की रिसर्च करवाते हैं, तो सुपरवाइजर इज द ऑफिसर whose approval is necessary before final submission of the report to the examination department of the university. ठीक हो गया? इसलिए सुपरवाइजर के सिग्नेचर्स मैंडेटरी है. इसी तरह जब आप किसी बिजनेस की रिपोर्ट लिखते हैं तो एक ऑफिसर दरमियान में सुपरवाइजर के रैंक का आपको अप्रूवल देगा तो आपकी रिपोर्ट फर्दर सबमिट होगी. दिस इज कॉल्ड हायरार्की विद इन बिजनेस. When you do this, mention the name and designation of the approving officer on the title page. Similarly, if your report is meant for circulation to officers other than the primary recipient, similarly, if your report is meant for circulation to officers other than the primary recipient, similarly, if your report is meant for circulation to officers other than the primary recipient, indicate their names and official titles. अगर आपकी रिपोर्ट जो है मेन द रिसिपिएंट से पहले कुछ और ऑफिसर्स
तक के पास से होके गुजर के जानी है तो आपने उनके सबके नाम लिखने। इसकी एग्जांपल भी मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से दूंगा। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो के थीसिस का प्रपोजल पेश करते हैं जिसके ऊपर अगर अप्रूवल मिले तो तब उनको थीसिस लिखने की इजाजत मिलती है। पीएचडी के लेवल पे उनको अपनी रिपोर्ट या अपना रिसर्च प्रपोजल 26 कॉपियां पे बना के ASRB हमारे यूनिवर्सिटी में है एडवांस स्टडी एंड रिसर्च बोर्ड, उसको भेजनी होती है जिसमें 26 मेंबर्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से बिलोंग करने वाले तकरीबन 26 प्रोफेसर्स उसको अपने अपने एक्सपर्टीज के मुताबिक जज करते, सवाल पूछते फॉर्मल सेरेमनी में, और उसके बाद वो टॉपिक इधर अप्रूव होता है या रिजेक्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं कि अगर रिपोर्ट फॉरवर्ड होने से पहले अगर हायरार्की एग्जिस्ट करती है और ऑफिसर्स की एक लिस्ट है तो आपने उसका अप्रूवल उन तमाम ऑफिसर्स से लेना है। उन 26 में से अगर एक भी शख्स जो है वो अड़ जाए और कहे कि ये काबिल कबूल नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाता है हमारे हाथ से। इसी तरह रिपोर्ट भी आपको जब पेश करनी है तो यू आर सपोज्ड टू गेट अप्रूवल फ्रॉम ऑल द ऑफिसर्स इन द मिडल other than the primary recipients. Indicate their names and official titles. Use a separate page for the purpose and the list of approvals and circulation along. Take great care in setting the items on the page symmetrically. Take great care in setting the items on the page symmetrically. Proper groupings of items and spaces are essential to make the title page look attractive. Some organizations provide a prescribed form for the title page to help their employees. In Exhibit 18.3, the whole page has been divided into 4 sections. The first contains the project and the report numbers written on the right-hand side respectively. The second section gives the title of the report typed in triple space in capital letters. The third section, which is centered on the page, indicates the authority for whom the report has been written. And the last section groups 2 items. ये मैं चीजें छोड़ रहा हूँ, ये सैंपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट जो है उसका फ्रंट मैटर इस तरह बनाया गया। रिपोर्ट नंबर 326, भारत स्टील कॉर्पोरेशन, हर्षनगर, चांदपुरा, 326917, a report on installing a new production plant prepared for Managing Director by S.J. Shinde, Assistant Engineer Production, approved by Sri Naroz Khan, Production Manager, 17 September 2014. So where there is no prescribed form, the sample as shown in Exhibit 18.3 will be appropriate. तो ये जहाँ ये एक प्रेस्क्राइब फॉर्म के मुताबिक रिपोर्ट का फ्रंट मैटर बनाया गया, लेकिन जहाँ पे कोई सैंपल मौजूद ना हो वहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर E42, रिपोर्ट नंबर R319, ये फ्रंट मैटर है इसका। रिपोर्ट ऑन combating the noise pollution engine model number Lexa 981, prepared for the direction of research OK Engineering Works, Dadabhai Road, Mumbai, by T. Gulab Rai, Senior Technical Assistant, 15 October 2014. If students' reports, the course requirements are also in students' reports. The course requirements are also mentioned as shown in Exhibit 18.4. Copyright notice. If a report is published, copyright notice is given on the inside of the title page as at 2009 Ram Gopal Shirde. Sometime the following note is added. All rights reserved. No part of this report may be reproduced in any form or by any means without permission in writing from the publisher. इसको कहते हैं intellectual property right. जिस तरह property किसी की उसके नाम हुआ करती है, इसी तरह intellectual property भी आपके नाम है। ये law by law है। अगर आपकी छपी हुई नज़्म, ऐसे छपा हुआ कोई नज़्म या छपा हुआ ऐसे कोई और शख्स अपने नाम से छापेगा तो वो क्राइम का मतलब कहते हैं, पायरेसी इसको कहते हैं, और इसको आप लिटिगेट कर सकते हैं अदालत में जाके कि इसने मेरे नाम से कोई पेंटिंग सेल करने की कोशिश की है या मेरा आइडिया सेल करने की कोशिश की है विदाउट माय परमिशन। 18.4, a report on admissions procedure at BATS by Ram Gopal Shirde, ID number
this and that. It was submitted in partial fulfillment of the requirements of TAC 312 technical report writing 10th of November 2009. Forwarding letter. There are two types of forwarding letters, covering and introductory. While both are written for the primary recipient of the report, the first type serves simply as a record of transmission of the report. It is not bound with the report as it does not contain any important information. Exhibit 18.5. Example आपको दी जा रही. Dear Secretary of State, I have the honor to present the report of the committee set up by your predecessors. आपसे पहले आने वालों की रिपोर्ट जो है वो मैं पेश कर रहा हूँ. The honor to present the report of the committee set up by your predecessors, Mrs. Thatcher, in 2009 to inquire into teaching, reading and writing English. मुझे 1 मिनट जरा दीजिएगा. Let me just take 1 minute's break. जी दोस्तों, बैक. आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. राइट, शुक्रिया. डियर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये एक सैंपल है आपको इसके अंदर. डियर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आई हैव द ऑनर टू प्रेजेंट द रिपोर्ट. ये फॉरवर्डिंग लेटर है जिसको आप कवर लेटर कहते हैं. जब कभी आपने अपना कोई मामला पेश करना हो किसी जगह तो आप उसके साथ एक कवर लेटर जरूर लिखते हो. तो ये एक फॉरवर्डिंग लेटर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरवर्डिंग लेटर्स, कवरिंग एंड इंट्रोडक्टरी. व्हाइल बोथ आर रिटन फॉर द प्राइमरी रेसिपिएंट ऑफ द रिपोर्ट, द फर्स्ट टाइप सर्व्स सिंपली एज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसमिशन of the report. It is not bound with the report as it does not contain any important information. ये रिपोर्ट के साथ बाउंड नहीं किया जाता, लेकिन उसको साथ में अलग डाल दिया जाता है लिफाफे के अंदर ताकि एक फॉर्मेलिटी फुलफिल की जा सके. तो जिससे आप ईमेल भी साथ लिखते हैं. अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, 2 रिक्वायरमेंट तो नहीं है ये, लेकिन आप एक कवर लेटर भी लिखते हैं कि मैं ये हूँ, मैं इस मकसद के लिए एप्लीकेशन जो आपने इन्वाइट की थी उसके अगेंस्ट आपको अप्लाई कर रहा हूँ. तो that's how it is. जैसा मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल अभी दे रहा हूँ कि आई एम अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट डॉक्टोरल स्कॉलरशिप जो कि एचसीसी ने अनाउंस किए हैं. तो उसके लिए मुझे फॉरेन लेटर चाहिए, एडमिशन का लेटर या एक्सेप्टेंस का लेटर, और उसके साथ एचसीसी का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जो फिल करना है, और सुपरवाइजर का मुझे सीवी भी साथ अटैच करना है. और उसके साथ साथ जब मेरी सारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए, यूनिवर्सिटी का एनओसी, अपना सीवी, ये सारा बना के साथ मुझे एक कवर लेटर भी फॉर्मल लिखना है कि आई एम अप्लाइंग फॉर ए पोस्ट डॉक्टोरल स्कॉलरशिप विद एचसी. तो उसके बाद एप्लीकेशन डोसियर कंप्लीट होता है. तो फॉरवर्डिंग लेटर या कवर लेटर या इंट्रोडक्टरी लेटर जो है ये फॉर्मेलिटी है, लेकिन ये लिखना पोलाइट है. इसको लाजमी कंपनी करना जरूरी है किसी भी रिपोर्ट के साथ भी या किसी भी मकसद के लिए. जब आप अप्लाई करते हैं तो आप एक, जैसे पाकिस्तान में जिसको कहा जाता है ना कि एप्लीकेशन लिखें जी, आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपका काम हो जाएगा, तो आपकी बात पहुंच जाएगी. तो दिस इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल फुलफिलिंग पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू. तो ये इसके साथ जब आप रिपोर्ट पेश करें तो उसके साथ आप छोटा सा एक फॉरवर्डिंग लेटर जरूर लिखते हैं, जिसका एग्जांपल आपको यहाँ में मौजूद है 18.5 में. डियर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आई हैव द ऑनर टू प्रेजेंट the report of the committee set up by your predecessor, Mrs. Thatcher, in 2009 to inquire into teaching, reading and writing of English. As the committee's chairman, I should like to place on record the great help I have received from the Muriel Stewart, who has acted as vice chairman throughout the inquiry. The committee's debt to its secretary, Mr. R. Arnold, HMI, is acknowledged in the introductory chapter. I should like to express my personal appreciation of the assistance he has given to the chairman and of the close cooperation in which we have worked. Yours sincerely, Alan Bullock, chairman, the RT. तो ये आपने एक फॉर्मल सा लेटर साथ में कंपनी करना है. The introductory letter performs almost the same function which a preface or an introduction does for a book, and its characteristics are those of a good business letter. जैसे आपने पहले सेमेस्टर में बिजनेस लेटर सीखे थे, बिल्कुल उसी तर्ज पे आप एक
जैसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी लेटर या कवर लेटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसको आप फॉरवर्डिंग लेटर भी कहते हैं। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें, किसी भी मामले के लिए जब आप किसी भी हायर अथॉरिटी को अप्लाई करते हैं तो आपको एक कवर लेटर लिखना ही होता है, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल का पार्ट है। इस तरह किताब का शुरू का चैप्टर या प्रेफेस या इंट्रोडक्शन उसकी जान हुआ करती है या उसका लाजमी पार्ट हुआ करती है, इसी तरह जिसको आप कह रहे हैं फॉरवर्डिंग लेटर, ये भी किसी भी रिपोर्ट का लाजमी मलजूम पार्ट है। थ्रू इट यू शुड एस्टैब्लिश रैपर विद द रीडर एंड पुट हिम into the proper receptive mood। आप अपने रीडर को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। आप किसी भी के भी टेबल पे अपनी कोई गुजारिश जब भेजते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो फौरन आपके डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ेगा, पहले वो कहेगा इसके साथ कोई लेटर नहीं दिया आपने मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप किस मकसद के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। इफ द एप्लीकेशन और कवर लेटर accompanies your performer, the reader will immediately be aware what you actually want। हमने भी अभी अपनी कोई एप्लीकेशन देनी हो यूनिवर्सिटी में, तो चाहे हम रजिस्ट्रार साहब को अप्लाई कर रहे हो या वाइस चांसलर साहब को या डीन को या हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, तो हम लाजमी तौर पे एक एप्लीकेशन या कवर लेटर देते हैं ताकि उससे उनको आइडिया हो जाए कि ये क्या। बेसिकली प्रॉपर रिसेप्टिव मूड का यही मतलब है कि उसको पता चल जाए कि वो क्या चीज पढ़ रहा है, किस मामले को डील कर रहा है। बिकॉज every table is filled with an enormous number of documents. No, this is not possible for the officers to go through those bulky documents all at once. Those cover letters and their subject lines tell those respective officers about what they are about to deal with. Besides mentioning the title, repeat particularly important point. Okay, the introductory letter performs, ये हो गया. The letter of transmittal is generally placed soon after the title page and bound with the report. इस तरह एक और एग्जांपल है, इसके नीचे आपको मौजूद नजर आ रही है, एक डिटेल कवर लेटर है, उसके बाद प्रेफेस आता है। जैसा किताब के अंदर भी प्रेफेस होता है, इस तरह ये भी प्रेफेस है, जिसको अक्सर लोग प्रीफेस भी बोलते हैं, लेकिन प्रेफेस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। द प्रेफेस इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्ट, नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिपोर्ट, एंड ऑफर्स इट to the reader. It contains almost all information which is given in the introductory type of letter of transmittal. The preface should not be confused with the foreword. Whereas the former is written by the author himself, the letter is customarily written by an authority or expert in the field, commending the work done. Day-to-day reports rarely have a foreword. Acknowledgements. शुरू के पार्ट जो है ना फ्रंट मैटर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो पहला ये कि आपने कवर लेटर साथ देना है, साथ प्रेफेस आएगा, प्रेफेस के बाद एक्नॉलेजमेंट। अनलेस यू हैव गिवन क्रेडिट एल्सवेयर, mention diligently the name of persons and organizations that have helped you in production of the report. अगर आपने थीसिस लिखा है या कोई रिपोर्ट प्रिपेयर किया है तो जिसने भी आपको असिस्ट किया है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और आपने लैब का काम किया है तो उस शख्स को भी आपने एक्नॉलेज करना है जिसने आपके लैब के बर्तन धो के दिए, जिसने आपकी शेल्फ्स भी साफ की हैं, असिस्टेंट, टेक्नीशियंस, लैब ऑपरेटर्स, सबको आपने एक्नॉलेज करना है। इसी तरह अगर आपने कोई रिपोर्ट प्रिपेयर की है तो आपने अगर सोलो काम नहीं किया और आपके साथ किसी ने असिस्टेंस दी है तो आपने सबको एक्नॉलेज करना है। दैट्स समथिंग व्हिच इज अकॉर्डिंग टू मैनर्स। When you include published materials and the list of sources is very long, use a separate page for the purpose. अगर आप published materials यूज कर रहे हो, लिस्टें बहुत लंबी हैं उन materials की, तो एक separate sheet यूज करें ताकि पता चल जाए कि ये चीजें आपने यूज की हैं। Clearly indicate that permission has been taken for the reproduction of copyright material, if any. Table of contents. If the report is long, say more than 10 pages, the table of contents is essential. Its function is to give the reader an overall view of the report and help him locate a particular topic or subsidiary topic easily. He will feel more at ease using the report the way he wants if he knows what to expect from it and where. It will, however, be superfluous to prepare a table of contents for short reports of 4 or 5 pages. The contents are compiled from the headings and subheadings of the report. Subheadings beyond the third order
are generally excluded. The page numbers are carefully checked against the text so that the reader does not feel frustrated when he opens a particular page and looks for a heading or subheading that is not there. While preparing the table of contents, bear in mind that the following points about its layout. Leave a 1.5 inch margin on the left. 1.5 inch margin से मुराद है कि this is less than the indentation we give. Indentation होती है कि लेफ्ट साइड पे आपने मार्जिन इतना छोड़ना है ताकि जब आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स लिख लें, जिस तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा गया यहाँ से लेके यहाँ तक, बेशक बुलेट है यहाँ पे लेकिन देयर इज अ मार्जिन। इसी तरह टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स जब आप देंगे तो लेफ्ट साइड से 1.5 इंच मार्जिन आपको देना होगा, जिसको तकरीबन 3 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट हो गई on the left and a 1 inch margin on the right. The right side पे 1 inch का margin देना होगा, the top and the bottom, और top पे और bottom पे भी आपको 1 inch margin देना होगा। ये margin आप जब MS Word यूज करते हैं तो उसके अंदर फुटा बना हुआ आ जाता है यहाँ पे ऊपर, तो उससे आपको अंदाज़ फौरन पता चल जाता है। Otherwise आप you go to the paragraph section and there you can adjust the length of each margin or the width of each margin. Leave 3 or 4 spaces and then type the first heading flush left. 3 or 4 spaces छोड़ के flush left करते हुए आपने पहली heading देनी है। Leave 2 spaces between headings and 1 space between subheadings. Subheadings के दरमियान 1 space देनी है, जबकि headings के दरमियान आपने 2 spaces देनी है। And then second order headings 4 spaces and third order headings 8 spaces. तो ये 4 spaces आपने second order headings जो देनी है उसमें देनी है, और ये further technicality that they are not that vital as such. Only for the sake of style they are okay but not beyond. An example of a table of contents is given in exhibit है, ये आपको यहाँ पे table of contents मिलेगा, जिस तरह किताब का table of contents होता है, जिस तरह preface उसको आपने इस तरह के डिजिट्स देने हैं, इसको आई थिंक रोमन डिजिट्स कहते हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स 4 पे, समरी 5 पे और इंट्रोडक्शन 2 यहाँ पे आके, यानी फर्स्ट पेज जो है उसके ये सब कैटेगरी आपने बनाई, उसमें आपने प्रेफेस, एक्नॉलेजमेंट, समरी देनी है टेबल ऑफ कंटेंट्स की। उसके बाद इंट्रोडक्शन पेज 2 पे है, और एक्चुअल एयर पोल्यूशन एपिसोड चैप्टर जो है वो आपका 6 से लेकर 9 तक चलेगा। 9वें सफे पे आपका शुरू होगा इफेक्ट्स इन जनरल, और 3 के सब पार्ट्स हैं, सब हेडिंग्स बना गए, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक। एंड देन चैप्टर 4 स्टार्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक एजेंट्स, पेज 14 पे स्टार्ट हो रहा है। इसकी सब हेडिंग्स 4.8 है। स्पेसिफिक एजेंट्स क्या है जी? पार्टिकुलेट्स, sulfur dioxide, carbon monoxide, lead, ozone, fluorides, noise, radiation, ये तमाम चीजें जो आपने इसके अंदर देनी है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स थे। एक्चुअल एयर पोल्यूशन से रिलेटेड ये चैप्टर, ये रिपोर्ट आपने बनाई है। एंड फाइनली conclusion, page 30, recommendation 31, glossary or glossary of terms that you used in your entire report. This will be at 32. The 32 pages एक report है. Reports are not supposed to be very long, particularly in businesses. लेकिन अगर वो Supreme Court की report है तो वो 900 सफ़ों की भी हो सकती है. लेकिन for the sake of business at this level, reports are usually less than 50 pages in length or in volume.